It's a 4-hour drive. Hello, guys. Welcome back to another Devstream. We are still working on the UI of the game. So, लास्ट स्ट्रीम के बाद से मैंने थोड़ा सा इसको बेटर बना दिया है. See, I've added this back button. I've added the online के लिए डाल दिया है मैंने. Now what I wanna do next is कि मुझे player interaction. Bullet projectile, food spawner, game manager, game settings, yes, health bar. God damn it, where did I put the thing with the main menu script कहाँ रखी है? ये वाली script. UI के अंदर scripts, UI scripts. Online lobby. Okay. Open this main menu script as well. I don't need these scripts right here. ओके सो यहाँ पे क्या है UI बटन स्टार्ट एग्जिट ऑनलाइन बटन ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं है लिस्ट बनाने की क्योंकि के ओके मुझे लगा UI और UI एलिमेंट्स दो अलग अलग लिखने पड़ेंगे so instead of start button it's like host button join button and quick join ऑनलाइन लॉबी पे लगी रहेंगी लिस्ट तो ऑल राइट श्योर okay so visual tree asset ठीक है पहले क्या करेंगे हम लोग अब एक फंक्शन लिखेंगे उसमें करेंगे यप I can just like press tab and stuff in this and write it पर वो करने पे क्या है ना मेरा वो या सो आई वाज सेइंग कि जैसे अगर मैं इसको वो कर देता हूँ टैब दबा देता हूँ यहाँ पे तो ये फिर मेरा को पायलट इनलाइन सजेशन में काउंट कर लेता है उसे
एंड यू नो मैं उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मेरे को आ रही है उसके लिए ना करूँ। देन यूआई डॉक्यूमेंट को हम लोग गेट कंपोनेंट कर लेंगे, अब एक में ही रहे हो जाएगा वो। देन इसकी ज़रूरत नहीं है। विजुअल ट्री, फिर क्या है, सेट मेन्यू बटन्स। रजिस्टर मेन मेन्यू इवेंट्स, रजिस्टर मेन्यू इवेंट्स, ठीक है। इसका दोनों का फंक्शन बनाया जाएगा, एक सेट मेन्यू बटन्स। हम्म। पीटी, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा था, क्रिएट एंड जॉइन रूम्स के अंदर एक स्क्रिप्ट लगी है, वो स्क्रिप्ट कॉल करके मैं उसका फंक्शन कॉल कर रहा था, राइट। इमेज ड्रॉप डाउन टेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट रूम बटन, क्रिएट रूम फंक्शन कॉल कर रहा था मैं। होस्ट बटन, क्रिएट एंड जॉइन रूम, क्रिएट रूम। ओके, एंड क्विक जॉइन के लिए कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा था? क्विक जॉइन का सिर्फ अलग ही फंक्शन है, क्रिएट एंड जॉइन रूम डॉट क्विक जॉइन रूम। नहीं, क्विक जॉइन ही तो है यार, क्या है ये? पढ़ नहीं रहा है क्या साथ में वो स्क्रिप्ट? ओके, सो जस्ट टू बी श्योर, मुझे ये बटन्स के नाम मैंने क्या दिए थे वो एक बार चेक करना पड़ेगा। लॉबी,
बटन, इमेज नहीं, ये नहीं, विजुअल एलिमेंट में क्रिएट रूम के अंदर टेक्स्ट फील्ड के अंदर होस्ट. Let's call it, oh no, no, no. Host button, join button. आई थिंक मुझे एक इशू आएगा यहाँ पे. Let me make sure if I'm right or not. Equals to. Do I need visual tree? I don't need it, right? वहाँ पे ज़रूरत थी क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैं मेन मेन्यू से ऑनलाइन में जा रहा हूँ ना. I needed it there, but I don't think I need it here. Good old classic layout scenes, UI scene. All right, let's start. Null reference आ रहा है. On host, clear, join. Null reference on host button, click. Create room. Last action, create. Did I not? Damn it. I think I did not do what I was supposed to do. Oh yes, look, 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 look. Start online. Console log. See, this was the issue I was talking about. So I have to make sure कि ये चीज़ें कि अगर ये फिल्टर खाली है तो होस्ट पे क्लिक ना हो. How do I do that?
So over here, image, no, not this image, this here, create room, text field, label. I need to see how this works. How does text field works in Unity UI toolkit? Text field username equals, yeah. All right. Okay. Let me think. ऑनलाइन लॉबी, ठीक है. बटन, टेक्स्ट फील्ड, क्या नाम था उसका, होस्ट. ठीक है. अब इसको भी मुझे करना पड़ेगा, राइट. होस्ट इनपुट फील्ड, यस, यस. ऑन होस्ट बटन क्लिक फील्ड, इफ यस. ठीक है. या फिर अगर इक्वल्स टू नल है तो रिटर्न. ना इसका नाम देना चाहिए मुझे या फिर इसका नाम देना चाहिए. आई कैन नॉट चेंज द नेम, so probably this host. Okay, let's try it out. Scenes, where are you, scenes? Online. क्या फोटोन सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ? हो गया. null reference in online lobby.
Damn it. Volume is supposed to be 0.1 but वो 0.1 जैसा फील तो नहीं हुआ. If you guys can notice, मैंने इसका क्रॉस हेयर और छोटा कर दिया है. See, this is 0.8. उसका पहले क्या 0.08 आया पहले. क्या पहले तो वो 1 पे था. सी, ये थोड़ा जोर से आया आवाज. दूसरी बार में धीरे से आया. Should I ask ChatGPT ने क्या बोला? अरे ये तो बहुत ही क्या दिखा रहा है ये. ये HTML में क्यों बनाने के लिए बोल रहा है मुझे. I host and join game if input field is not empty. Here's the corrected code that check if input field are not empty before hosting/joining. क्या करा उसने. क्यू टेक्स्ट फील्ड ये ज्वाइन. ठीक है. रजिस्टर कॉल बैक फॉर क्लिक इवेंट्स. उसके बाद होस्ट इनपुट फील्ड इज नॉट इक्वल्स नल. ये करा उसने. on join button click. Should I make some changes in script? You should update the script validating the input fields before attempting to create and join. Here's the improved version. क्योंकि वो इस इनपुट पे पेस्ट कर रहा है काम.
No room name needed for quick join. Okay. Join room. Join input.text. अगर मैंने दोनों स्क्रिप्ट छाप दी तो क्या है, दोनों स्क्रिप्ट को पढ़ के आई कैन सी फ्यू इश्यूज. Method reference input fields aren't being used. Yes, yes, that's what I wanted to. Missing connection between the two script. That is what I was, worried about. So इसमें क्या करा है अब इसने, जैसे create input tmp text है, पर create input को फिर मैं assign कहाँ कर रहा हूँ. Ensure your document has this name correctly. मैंने यहीं से छापा है. इंस्पेक्टर में उसको असाइन करना है. What if I copy paste this whole thing एंड मैं फिर बाद में चेक करूँ कि क्रिएट इनपुट और ऑनलाइन लॉबी कैसे कनेक्टेड है. बिकॉज आइडियली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, राइट. मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ. सीरियलाइज्ड फील्ड, ऑनलाइन लॉबी, ऑनलाइन लॉबी. यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन लॉबी डॉट होस्ट इनपुट फील्ड डॉट टेक्स्ट. हम्म गाइस आई नीड अ बेटर बैकग्राउंड फॉर माय गेम. किसी के पास हो या कहीं से मिल सकता है तो मुझे बता दो.
null exception clear. Okay, let's give it a go this time. देखते हैं क्या होता है. null reference online lobby. ये डिसेबल क्यों हो गई स्क्रिप्ट? ओके वेट. होस्ट. नथिंग. ए host. Okay, that's something. So this seems to be working. बस ये डिसेबल क्यों हो जा रही है? लॉबी सीन ऑनलाइन. Mm-mm. 33. ज्वाइन बटन क्लिक. क्विक ज्वाइन. नाम गलत दे दिया क्या मैंने? लॉबी. ज्वाइन बटन ऑन क्लिक इवेंट. More than one new element of certain. Then when you try to register call is the issue. Because it can't find element with those name in XML file. The element name does not match case sensitive. अरे कॉपी पेस्ट कर रहा है यार, क्या बकवास कर रहा है ये? ज्वाइन बटन ठीक है. JOIN BUTTON ठीक है. कॉपी. नाउ टेक्स्ट फील्ड लेबल ये टेक्स्ट और ये ज्वाइन पेस्ट ठीक है. See again with the thing. I just copy pasted stuff.
इन्यूमरेटर में सेट मेन्यू। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? अगर ऐसा है तो मैं इसको एक बार स्टार्ट में चला के देखता हूँ। स्टिल लाइन नंबर 33 एंड लाइन नंबर 17। सेट मेन्यू बटन। सो मे बी ज्वाइन बटन किसी और चीज़ का भी नाम है, तो मैं इसका नाम एक बार ज्वाइन गेम बटन कर देता हूँ। हाउ डज दैट साउंड? ज्वाइन गेम, ठीक है। ज्वाइन गेम बटन, ज्वाइन बटन में ज्वाइन गेम बटन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सेव। नाउ गॉड डैम इट, अब भी क्या दिक्कत आ रही है इसे? लाइन नंबर 33 एंड 17 ना। Instead of doing this, if I do directly, should I try to directly? Okay, let's try this now. What happens? Line number 20. Quick join button. Wait, are you saying कि जिस
Right. This should work. This should work. क्लियर कर दिया हाँ. That is this is so weird, you know. जब भी लाइक हमेशा से यही सिखाया गया था कि अगर ये लाइन बोल रहे हैं तो उसकी ऊपर वाले लाइन में एक्चुअल एरर होगा. यहाँ तो गेम ही पलट दिया उन्होंने. गेट नेम कैन. ओके. ओके. यू आई सी. स्टार्ट गेम ऑनलाइन. Host, nothing happens. Join, nothing happens. I write A, host. What? This is the old canvas. Hmm. Start online game button click. Oh, this game object is active. Retry, retry, retry. Host, host. Nothing. A, host.
Host. Host. Nothing. Hmm. God damn it. What is wrong with you, game? Why are you not hosting? Oh wait. Yeah, yeah. Activate हुआ. Let's see if I face some errors while loading this or something. Start game button. Right. Host. Hello? Yes.
Sorry about that delay, guys. Okay, I got a call for a job or something. नोएडा बुला रहे हैं मुझे। आई मीन अगर सब कुछ सही हो जाता है तो, बट आई डोंट नो। सब सही हो जाता है उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। सो वी आर हियर, और मैंने यहाँ पे एक डीबग लगाया था ना। रूम क्रिएटेड ऑनलाइन होस्ट। फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा है जब मैंने होस्ट पे क्लिक करा तो। राइट, होस्ट बटन क्लिक। क्रिएट एंड जॉइन रूम्स, क्रिएट रूम, होस्ट। नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। सो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें वो इफेक्ट डाल देता हूँ। यू लॉबी बटन। Hold up, what did I do for that? Save. Button hover. Scale 1.2, 1.2. ठीक है। You know what I should do? मैप पे जैसे हवर करूँगी तो इस पर भी डाल दो। ठीक है, लेट मी टेस्ट इट आउट वंस। हम्म। मे बी इसका हवा थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगेन फंक्शनैलिटी में कुछ इशू आ रहा है। 1.11। क्रिएट रूम, वैल्यू तो है, तो होस्ट में रजिस्टर कॉल बैक।
Hmm, host function is not called from. The issue create room function is being called but likely failing silently, or the debug log isn't showing here because solution problem are identified. No null check can create if the reference isn't set in inspector, the function call will fail. अरे तो कनेक्ट तो है ना, और अगर वो नहीं है तो उसके लिए तो एरर नहीं आ रहा. empty room validation, you're checking if the input text has text but not if room exists. ठीक है, ऑनलाइन लॉबी में ये क्या कह रहा है? ऑल राइट. ओके, क्रिएट रूम, चेकलिस्ट टू फिक्स योर इशू. उसने क्या बोला? क्रिएट रूम अगर फोटो नेटवर्क कनेक्टेड फॉल्स है तो डिबग डॉट लॉग एरर. Okay, room created, create. Debug logs will tell you exactly what, most likely it's clear. तो इसने बेसिकली करा क्या है? इसने बेसिकली जॉइन बटन क्लिक इवेंट है तो उसमें जॉइन बटन क्लिक हो रही है एंड debug डॉट लॉग एरर. ठीक है, let's give it a go. I noticed something कि जैसे मुझे उनका कॉल आया था ना, मेरे व्यूअर्स 3 पे थे एंड जब से कॉल ख़त्म हुआ है तब से मैं अकेला ही देख रहा हूँ अपनी स्ट्रीम. स्टार्ट ऑनलाइन गेम बटन क्लिक, होस्ट बटन फाउंड. ठीक है, और ये क्या है? होस्ट इनपुट फील्ड नल. होस्ट इनपुट फील्ड उसको मिला नहीं. ओके,
ठीक है. Okay, there we go. Food spawn at waves 2 and 6. So I have a better looking UI now, main menu, and then उसके बाद lobby scene. लॉबी सीन से फिर वहाँ जाते हैं हम लोग. कहाँ जाते हैं? ओवर देयर. Okay, okay. Hmm. So I should create a setting script जहाँ पे किस चीज़ की सेटिंग्स होंगी. हाँ. I think I should probably make a UI for my game right now. गेम के अंदर जो यूआई आता है. Where is it? Where is the scenes? Medieval. ये है मेरा उसके लिए कैनवस. ओके, शुड आई यूज इट हियर? अगर मेरे को टूल किट यहाँ यूज करना है कि मोबाइल यूआई फिर दिखेगा नहीं. ये जो मैंने बनाया है वो भी नहीं दिखेगा, राइट? UI theme, UI document, main menu. Uh-huh. Right here, 1920 by 1080 fit. Button. So I'm making it button ताकि जब ये अगर मोबाइल के लिए होगा तो
वहाँ इशू ना आए। ग्रुप बॉक्स। उसके अंदर इमेज। होल्ड अप। हम्म जन्म जेमिनाई दी द Can you suggest me a YouTube tutorial? If you've been 27 minutes. If you've been watching Unity's development, you know that UI Toolkit has been in a bit of identity crisis. It started its life as a tool for building Unity editor extensions, but over the past few years, Unity has been aggressively pushing it as the future of runtime UI. So today, we're going to build in-game UI to see what UI Toolkit can actually do for our games. Before we start building, let me give you some context. UI Toolkit uses a fundamentally different approach than the traditional UI GUI system. Instead of placing components directly on the scene, you build your interface using UXML files for structure and USS files for styling, similar to how HTML and CSS works. But fear not, you don't need to write everything from scratch. Unity has provided a nice visual editor. Okay, so let's get into Unity with this sample project and let's implement our UI. So to work with UI Toolkit, let's first create a new folder. I will call it UI Toolkit. And inside of it, we need to create UI document. This will be sort of a configuration. Be right back, guys. साफ सुखाना है.
position for our canvas objects. So let's right click, create. Here you should see UI toolkit and select UI document. This UI document will be placed on top of our game view, so I will simply call it game UI. Okay, and then in the hierarchy, let's add a UI document as well. So let's right click, UI toolkit settings, folder. Let's yes, I understand that. I have did it. that. You can see like label, button, toggle, progress bar, and so on and so on. Here we have hierarchy, same as the Unity scene. Style sheets, we'll talk about that. Yes, if you're I know how that works. Our current game view, and to fix that, click on this game UI. That automatically resizes this whole canvas background, and here select camera, and then select your main camera. That way, now in the UI toolkit preview, we get a nice look of how the UI will look like when placed on top of our game view. Okay, so before we'll start placing any real elements on our scene, first I would like to just give you a short example of how to place something new. Let's drag this view, drag and drop. And if we want to change any of its properties, here on the right we have this big inspector window with a ton of different properties, size, spacing can change. I can call it. My builder is based on UXML, a preview of every represent building easier. So that was I understand just what you're trying to teach example. me, but I want to know how I can do that. मुझे वाह button. Hide it for now. I will remove this button and we'll start with building the actual interface for our simple game. I would like to start with the player profile, so something here in the corner that will represent the currently selected player, its name and class, for example. So, similarly as with the button a second ago, I will start with visual element. Visual element is, as the name suggests, just an empty element that can be some. Why is it called main menu UXML? Don't save. Why document main game. ठीक है 1920 match the game view. Okay. $1920 by 1080. ठीक है fit to viewport. ठीक है ये हो गया मेरा. Next sort of a container group. It has multiple uses, so let's use it as the frame for this player profile in the corner. By default, visual container is being stretched to the entire size of the page. If I would go here to background and change its color, you will see that it's overlaying the whole interface. We do not want that. To fix that, let's go to the position, and instead of having relative position that tries to stretch it to every screen corner, I will change it into absolute. Now it's extremely small, it's actually 0 by 0, so let's stretch it like that and move it here. As you can see, anchors have automatically changed to say that this element is placed
42 pixels from top and 50 pixels from left. Let's maybe unify that to be 48 and 48 in both axes. Okay, next let's quickly style this component. I really like this color used in the game, this dark blue, but actually we can't use it because it will conflict with the game scene elements. So okay, now this is like a decision time. I have to make a decision कि प्लेयर का ईआई कैसा रहेगा. So you know what I'm thinking कि मेरे इसमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो है नहीं कि जैसे 4 लोगों की टीम है या फिर आई थिंक मोर देन 4 प्लेयर्स कैन जॉइन, राइट? तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि कैन मोर देन 4 प्लेयर्स जॉइन? आई डोंट नो. बट इट इज़ पॉसिबल मोर देन 4 प्लेयर्स कैन जॉइन. तो अगर मोर देन 4 प्लेयर्स ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पूरा भर जाएगा एंड वहाँ पे नाम जो है वो फुल होते जाएंगे. सो आई थिंक अभी जैसा सिस्टम है, प्लेयर प्लेयर के ऊपर प्लेयर 1 और उसके नीचे हेल्थ. प्लेयर 1 की जगह मैं बाद प्रॉब्ली उसका नाम डाल दूंगा बाद में. ओके, दिस विजुअल एलिमेंट इसको कर दो एब्सोल्यूट. How do I get it in the center? Justify comment right here. Auto. Yes, that's what I want. Hmm. So I will maybe select here in the background color a similar color like that, and then I will make it a bit darker. So that will be our interface here in the corner. Also, to change its aesthetics a little bit, we can find here border properties and experiment with radius. So maybe I will change radius to
बटन एलिमेंट के अंदर। न्यूमेरिक फील्ड्स। वेट अ मिनट, मेरे को टेक्स्ट फील्ड में डालने की तो जरूरत नहीं पड़ी थी। प्रोग्रेस पास। Borders, background color, black, red. Nothing changes. ठीक है। टाइटल कुछ नहीं। डिस्प्ले साइज, स्पेसिंग, कलर, टेक्स्ट का कलर। टिंट कलर वाइट, ग्रीन, नथिंग। Can I unity progress bar, visual element, label? नप, ये तो बंद ही है। I cannot do that. How do I change the color? God damn it, how do I change the color? Outline color, red? No, black.
बॉर्डर कलर ब्लैक, कुछ नहीं हो रहा। नथिंग। कर्सर नहीं। एनीवन नो हाउ कैन डू दैट? ये इसको ग्रीन करना है मुझे, जो वाइट कलर का दिख रहा है। Save. Color is red, black, imaged in white, background color ये। Eight pixels from every side, and now you can see that this container has this rounded edges. Okay, that's nice. Let's continue. Next, I would like to add an image that will display the currently selected character. Guys, I'm gonna watch it off stream. 3 बज गए हैं। I should probably have some lunch and उसके बाद मैं वीडियो देख के करता हूँ इसे कंप्लीट। आई डोंट नो इसमें मेरे मतलब का कुछ है या नहीं। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्ट्रीम। प्रॉब्ली रात को गेम खेलूँगा या कल डेव स्ट्रीम में मिलते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। प्रॉब्ली उससे पहले ही कर दूँगा।